Welcome everyone. So in this video, I'm going to discuss various examples of diastereoselectivity which are absolutely imperative from various entrance exams point of view. And this video or all these examples or all the reactions in the video are taken from the book by Jonathan Clayden, which is an excellent book on organic chemistry. And there is a chapter of on diastereoselectivity in that particular book. So all these examples are taken from that book. So in a way, you can say this is kind of a review of that chapter. If you are not able to understand the chapter, then you can probably watch this video. Then you'll be able to follow the all the reactions that were given in that particular book. What was the first thing that they say in the book? Okay. So first of all, they introduce the concept called enantiomers and diastereomers. We know that all the enantiomers, they are mirror image of each other. For example, let us suppose we have this enantiomer. If we take a mirror image of this particular compound, and this is what we end up getting, and one of the key features in that case is that the configuration at these two centers completely changes. So here they were RR, they are going to give us the SS configuration. So we can say these two are the enantiomers. So enantiomers are the mirror image of each other. Similarly, these two are the enantiomers. But when we talk about the diastereomers, these diastereomers are the stereoisomers which have non-superimposable on their mirror images. For example, these two are diastereomer because the configuration at these two carbons is probably maybe the same, but at the other carbon it is different. So these two cannot be the mirror image of each other. Similarly, these two, and these two. So all these four are the diastereomer. For example, these two are their these are diastereomeric pair, these two are diastereomeric pair, these two are diastereomeric, and these two are diastereomeric pair. So in this chapter, this is what we are going to look at. Whenever we carry out a reaction on a substrate where there is a chiral center already present, then we observe a formation of one of the diastereomer in excess over the others. And why does that happens? Is there any way to explain the formation of such diastereoselective? Oh, sorry. Is there a way to explain the formation of such compounds? There were many models or many many ways to explain such phenomena. So in this chapter, that is what we are going to look at. But before we begin, these is two things that we have often heard about. One is the stereospecific reactions, the other is stereoselective reaction. So this is very important to understand, because at times when we appear for certain interviews, this is one of the questions that is generally asked to us. So the most simplest way of putting this forward is to say any reaction is stereospecific. It is already pre-decided. For example, by looking at the starting material, you can clearly tell what the product is going to be. And now we are going to discuss the various examples. Whereas in the case of stereoselective reaction, what you get is a formation of one of the product in more quantity than the other. Means one of the product is formed predominantly, whereas in the stereospecific reaction, they are very specific, as the name suggests, specific. They're pretty specific. So the starting material stereochemistry is completely conserved in the product, and you can clearly tell what the product is going to be. So let us look at various examples of stereospecific reaction first of all, and then we'll look at few of the example of stereoselective reactions. Number one thing, whenever we talk about SN2 substitution reaction, they are stereospecific because we can clearly tell that these reactions, they proceed by the the inversion of configuration. So the attack always takes from backside. So there is a change of configuration. For example, when this acetate ionate attacks, the configuration change from S to R. Similarly, in this case, it changes from R to S. And we have this amine attacking the epoxide from the backside. So the stereochemistry that we observe in this case is going to be the trans, because we know the SN2 substitution, the attack takes place from the backside. It means the product that we get is anti to each other. So they are a perfect example of stereospecific reaction. So we don't have to be rocket scientists to determine the product. E2 elimination or stereospecific. We absolutely know in order for E2 elimination to take place, both the eliminating group must be anti-periplanar to each other. For example, when this bromo compound is subjected to dehydrobromination, then what do we end up getting? These two groups, hydrogen and bromine, they must be anti-periplanar.
Then what do we get is Z product. And when we get E product, when okay, so in this case they are anti-periplanar. In this case, we need to, bring this phenyl group to the cis position. Only then this hydrogen and bromo can be anti-periplanar to each other. So similarly, the MCPB epoxidation, we know it specifically takes place from one side, and both, since both these phenyl group, they are on the same side, because we are starting from the cis olefin. The product that we are going to get is a syn-phenyl group, where both the phenyl groups are going to be on the same side. So we can clearly say that these E2 elimination are also stereospecific in nature. Apart from that, the bromination of cis and trans-alkene, this is again a very, very good example that has already been taught to us in the bachelor's. This is a very good example of stereospecific reaction, because we know the bromination of trans-alkenes, they always give us the anti-dibromide compound, means anti-product. And whenever we talk about this cis olefin, they give us the syn-dibromide. So this is the mechanism via which the reaction takes place, where the first step is the formation of the brominium ion, then it attacks from the backside, and then this is just the simple representation of the bond in various ways. And here I'm going to talk about a very, very important example from the exam's point of view. This is the iodolactonization of gamma delta acids. When this is gamma delta, this is alpha beta gamma delta. Whenever gamma delta acids are treated with iodine and sodium bicarbonate, we always end up getting the iodolactonized product, because this reaction is called iodolactonization. So what is happening? We know that the sodium bicarbonate, what it forms, it leads to the formation of carboxylate salt. And similarly, in using when you're using iodine, it leads to the formation of iodine, this iodonium ion. Now in this case, the stereochemistry of the iodonium ion that is shown to us is it is shown to us as beta. It can be absolutely alpha, because product के अंदर जो stereochemistry है ना, stereochemistry of oxygen and iodine, okay, this bond and this two bond is trans. So it doesn't matter whether this is alpha and beta in the product, this is always going to be trans to each other. This is something that you have to be mindful of. And the other thing that you should remember is that the carboxylate ions, they are not a very good nucleophile. So this which makes this reaction very, very important. Okay? So what happens? This attacks, and since this is attacking from the back side, and this opens up, that is why the stereochemistry of this at these two centers you end up getting is the trans. That's the sole reason you get the trans stereochemistry. At this project, यहाँ पर ये वाला जो आइडोनियम आयन फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये वाला मैं जिस वाले उसकी बात कर रहा हूँ, दिस 3 मेंबर्ड बॉन्ड की, ये आपका अल्फा फेज भी हो सकता था, मतलब आपका यहाँ पर जिगजैग बॉन्ड भी हो सकता था आपका। तो यहाँ पर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तब क्या हो जाती, यहाँ पे जिगजैग हो जाता और यहाँ पर आपका सॉलिड लाइन हो जाती, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री उस केस में भी ट्रांस रहेगी। दैट इज जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। एक और एग्जांपल ले लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। अगेन द सेम आइडोलैक्टोनाइजेशन हैज टेकन प्लेस। सो अगेन we know the formation of iodonium ion, and then this attacks again, what it leads to the formation of, once this attack, and since the only difference is methyl in this case was this is a trans olefin and this is a cis olefin. Once this attacks, it leads to the formation of this iodonium ion. What they have done, just to simply they have rotated it to seen it like that. So in this case, this product is going to be syn, that is both iodine and oxygen are syn to each other. And we can see, since no reaction is taking place, these two functional groups, they are not participating, as a result of which stereochemistry at this position is not changing. So this is a very logical way of going ahead with the answers, and these two are absolutely important examples from exam point of view. बहुत ज़्यादा अच्छे important example हैं. Now let's look at the stereoselective reaction, and this is one of the questions that was asked in this year GATE exam. So whenever you see you have a coordinating group, non-coordinating group, like whenever you're carrying out the epoxidation of an alkene in the case of cyclohexene ring, and you have functional groups like OAC, we know that the hydrogen of oxygen is being replaced by acetate group. So the attacks takes place from the opposite manner. Okay? So it proceeds something like that. So what I will do, I will try to just make a video in this, in which I
show how this looks like in the form of the model. This is what I will try to show you guys, and then I'll try to show you why the attack takes place from bottom side. Okay, so the only thing as of now you can remember, जब भी आपका OAcetate group होगा, attack will always take from the opposite side. So what they are trying to say that this particular diastereomer predominates. Once again, यहां पर आपका एसिडेट आपका क्या हो सकता था, एसिडेट आपका अल्फा हो सकता था, ये आपका बीटा हो सकता था. दे हैव जस्ट क्लियरली, आई मीन इन्होंने बस केवल इसको इस तरह से दिखाया है आपको समझाने के लिए कि इन दोनों की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, इन सेंटर पे ये ट्रांस है. मींस ऑक्सी आपका जो इपॉक्सीडेशन हो रहा है वो हो रहा है जिस साइड पे ओ एसिडेट है उसके अपोजिट साइड से हो रहा है. दिस इज जस्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, यहां पर अल्फा होता है और यहां बीटा होता है, दैट्स इट. और अगर आपका कोई भी कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, लेट अस से ग्रुप्स लाइक OH, then the epoxidation always takes from the same phase because now you have this OH. So what it does, it just coordinates with the MCPBA, as a result of which the epoxidation takes place from the same phase. Okay, so आपको ये ऐसे भी हो सकता था कि ये दोनों के दोनों अल्फा फेज भी हो सकता था, ये भी अल्फा फेज हो सकता था. सो दिस इज जस्ट अगेन अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक तरीका है दिखाने का कि आपका मेजर डायस्टेरियोमर कौन सा बन रहा है. ठीक है, सो याद रखो जब भी OH होगा इपॉक्सीडेशन सेम फेज से होगा. अगर हम यहां पर साइमन स्मिथ रिएक्शन भी करते, लेट अस सपोज साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या होती है, इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर आपका क्या होता है कि कौन सी रिंग होती है वो, साइक्लोप्रोपेन रिंग. ओके, साइक्लोप्रोपेनेशन यहां होता यूजिंग साइमन स्मिथ रिएक्शन, वो भी सेम फेज से होता अगर आपका OH है. ठीक है, ओएसिडेट होता तो वो अपोजिट फेज से होता. सो दिस इज स्टीरियोसेलेक्टिव, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन बिकॉज हियर यू आर गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सेस ओवर द अदर. ठीक है, so this is a very very good example. Okay, so this is what I was trying to tell you, that whenever you have a chiral center already present in the molecule and what you are doing is you are reducing a carbonyl group, so what you observe, you observe a formation of one of the enantiomer more than the other. Whereas in the other case, when you are carrying out the Grignard reaction, now this product has predominated over this one. So initially there were number of theories and models were proposed. The first one which gathered the attention of the people was the Cram's model. Okay, so what does the Cram model suggested? What the Cram model says that whenever you have functional group next to the carbonyl group, they can be placed in a way such that कि जो largest group है that should be anti to the carbonyl, ये उन्होंने बोला. और आपका जो मीडियम साइज ग्रुप है वो ऐसे, और स्मॉल साइज ग्रुप यहाँ होगा, और आपका फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एंड देन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई दैट वाज अ मेजर प्रोडक्ट. बट द क्रैम की प्रॉब्लम ये क्या थी कि व्हाई द क्रैम वाज इज नॉट एक्सेप्टेड दीस डेज. इसका रीजन ये होता है कि ही डिड नॉट टुक स्टीरिक्स इनटू कंसीडरेशन, बिकॉज जब आप लार्जेस्ट ग्रुप परपेंडिकुलर, आप सॉरी लार्जेस्ट ग्रुप जब आप एंटी कर रहे हैं कार्बोनिल पे, सो व्हाट यू आर डूइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीरिक बिटवीन दिस R एंड अ लार्ज ग्रुप, as a result of which it is sometime it does not take steric into consideration. So there was a requirement of a new model, or in fact you can say at the same time Felkin-Ahn, he came up with the model in which he said that instead of this large group being anti to the carbonyl, it can be at perpendicular to the carbonyl. perpendicular हो सकता है आपके वो carbonyl के, और आपके जो इस R ग्रुप के पास होगा वो होगा स्मॉल ग्रुप होगा. ठीक है, in order to minimize the sterics that takes place. ठीक है, तो this was just accepted. और ये तो just आपको दिखाया गया कि there are number of ways how you can simply write a particular diastereomer. Just they have simply rotated the bond and try to depict you. Now अब हम कोशिश करेंगे समझने की कि what is the correct way of writing Felkin-Ahn model, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया और बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिससे आप श्योर शॉर्ट वे में कभी भी आप गलत Felkin-Ahn मॉडल ड्रॉ ही नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अ शॉर्टकट. जो मैंने वीडियो बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. यूजिंग दैट वीडियो कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया होगा आप उसका 100% एक्यूरेट Felkin-Ahn मॉडल बना सकते हो, और एक्यूरेट प्रोडक्ट आप उसका डिपिक्ट वो मतलब पता लगा सकते हो कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है रिएक्शन के अंदर. ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के देयर आर वेरियस कन्फॉर्मर्स दैट आर पॉसिबल. अगर हम Felkin-Ahn में बोले, हमको पता है कि लार्जेस्ट ग्रुप हमारा फिनाइल है, फिर मिथाइल, और स्मॉलेस्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा कार्बोनिल है. तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे ऐसे कार्बोनिल कर ले, लार्जेस्ट ग्रुप आप फिनाइल यहाँ डाल दें,
मिथाइल यहां डाले, हाइड्रोजन यहां डाल ले, क्योंकि तो बहुत सारे, क्योंकि ये आपका क्या है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसके अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है, मतलब ये बॉन्ड तो बहुत ज्यादा रोटेट कर सकता है। तो आपका फिनाइल ग्रुप अब नीचे की तरफ भी आ सकता है, आपका फिनाइल ग्रुप यहां भी आ सकता है, बट हमें फेल्किन-आहन ने क्या बोला कि जो आपका लार्जेस्ट ग्रुप है दैट शुड बी परपेंडिकुलर। तो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन ओनली दीज टू कॉन्फॉर्मेशंस दे लुक perfectly fine. Okay, but now the question is, why did we went ahead with this particular model? इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड का करेक्ट फेल्किन-आहन मॉडल यही क्यों है, ये वाला क्यों नहीं है मॉडल? इसका अगर आपको पता लगाना है तो अगेन मैं बोल रहा हूं, मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, आप इसको बिल्कुल कोई डाउट ही खत्म हो जाएगा आपका कि ये वाला मॉडल हम कैसे डिसाइड करते हैं कि how to generate a correct Felkin-Ahn model. Okay, so now just discussing it. So there are two ways, and now the nucleophile can act from this side and this side as well. And we know that this largest group और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो मतलब फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, ऑब्वियसली स्टीयरिक होगा। सो व्हाट इट डज, न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स टू अप्रोच फ्रॉम दिस साइड। जब वो यहां अटैक करेगा तो आपका क्या हुआ, OH ग्रुप यहां गया, इधर आ गया। अब सिंपली इस न्यूमन कॉन्फॉर्मेशन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है उनको आपको सॉलिड वेज के अंदर। once again, I have already made a video on the conversion of Sawhorse to solid wedge, Fisher to Fisher to Sawhorse, Sawhorse to Newmann, Newmann to सॉलिड वेज यूजिंग मॉलिकुलर मॉडल। उससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि हम कैसे ये पूरा का पूरा कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी ये करने के अंदर डिफिकल्टी होती है तो यू कैन प्रॉब्ली वॉच दैट वीडियो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, ठीक है। और दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्टेड, जो हमने भी पीछे एग्जांपल देखा, दिस वाज फाउंड टू बी द मेजर आइसोमर। तो इसका मतलब फेल्किन-आहन बिल्कुल करेक्टली प्रेडिक्ट करता है कि आपका मेजर कंपाउंड क्या होगा, ठीक है। अब अगर इन्होंने एक सवाल हो गया कि अब तक तो सही था, बट व्हेनेवर अल्फा पोजीशन पे, ये कार्बोनिल पे आपका क्या हो रहा है कि इनोलेट एडिशन हो रहा है। सो एट अल्फा पोजीशन व्हेनेवर यू हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस अल्फा पोजीशन में आपका क्या है कि एन डाइब्यूटाइल ग्रुप है, और हमको पता है नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट वाज नॉट, दैट वाज समथिंग दैट रिक्वायर्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडल। जो हमने फेल्किन-आहन मॉडल पीछे डिसाइड किया उसके अंदर हमने क्या बोला था, फेल्किन-आहन मॉडल के अंदर हमने ये बोला कि हमारा लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी सेड। बट इन दिस केस whenever you have an electronegative atom it should always be placed perpendicular to the carbonyl group, और उसका एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, और इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल में वहां समझाया हुआ है। तो आपका इसका करेक्ट फेल्किन-आहन मॉडल ये वाला होगा, और जब आपका इनोलेट एडिशन करेगा इट विल गिव राइज टू दिस प्रोडक्ट, जो कि इनोलाइज करके आप सॉरी उसको सिंपली आपको सॉलिड वेज में कन्वर्ट करना है और आपको ये वाला मिल जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेनेवर वी हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अल्फा टू द कार्बोनिल, इस कार्बोनिल की अल्फा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा परपेंडिकुलर क्यों प्लेस करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, हम देखते हैं जब भी हम बात करते हैं ना इसकी, whenever we have an a good living group which is present alpha to the carbonyl, तो यहां पर SN2 सब्स्टिट्यूशन का रेट है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इट इज वेरी फास्ट, द रेट ऑफ SN2 सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी फास्ट whenever you have a living group attached next to a carbonyl group, and there is a reason for that. What happens, the pi star orbital of the carbonyl and the sigma star orbital of the chloride, here that is what we have depicted, pi star orbital of the carbonyl and the sigma star orbital of the carbon chlorine bond, what happen, they combine as a result of which they form a new LUMO which is of much more lower energy। और अगर वो लोअर एनर्जी का है तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा फास्टर रेट पे हो सकता है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन मच फास्टर हो गया। जैसे कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल की आपकी क्या है कि कार्बोनिल का आपका पाई स्टार ऑर्बिटल ये है और कार्बन XCX बॉन्ड हो गया, कोई भी हो सकता है आपका अच्छा लिविंग, उसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल आपका ये है, तो जब दोनों के दोनों ये कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जो न्यू हमारा लूमो बनता है वो लोअर एनर्जी का होता है और ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज, हम यहाँ लूमो की बात क्यों कर रहे हैं, हम लूमो की सिंपली पर लूमो स्टैंड्स फॉर
लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. सो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है, these do not have electrons, they are electron deficient. That is why we are talking about LUMO. And it is the whenever the nucleophile attacks, and वो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या ला रहा है, न्यूक्लियोफाइल के होमो रिएक्ट कर रहे हैं इस न्यूअर मॉलिक्यूलर LUMO के साथ. तो सेम चीज होती है जब आपका इंस्टेड ऑफ अ गुड लीविंग ग्रुप, whenever you have an electronegative atom, जैसे कि आपका OR हो गया, NR हो गया, SR हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा कार्बोनिल के साथ में, whenever it is attached, the same thing happens actually. When these are in this carbonyl and this CX, when they are perpendicular to each other, they combine to form a new LUMO which is of lower energy, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक कर सकता है. ठीक है, बट सच overlap only takes place when the carbonyl and this electronegative atom they are perpendicular to each other. ठीक है, so इसी की वजह से उन्होंने क्या प्रपोज किया कि whenever you have an electronegative atom attach alpha to the carbonyl, this जब भी हम इसका हम मॉडल बनाएंगे ना, Felkin-Ahn मॉडल बनाएंगे, this electronegative atom will always be प्लेस परपेंडिकुलर. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अब हमें इसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेक्ट Felkin-Ahn मॉडल बनाएंगे. इसका करेक्ट Felkin-Ahn मॉडल हमारा ये वाला होगा. ठीक है, हमारा हेटेरोएटम कौन सा है, अल्फा पोजीशन पर नाइट्रोजन है. ठीक है, कुछ लोग ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि ऑक्सीजन भी तो है यहाँ पे, बट दिस इज नॉट ऑन अल्फा कार्बन, दिस इज ऑन बीटा कार्बन. ये बीटा कार्बन पे है. ठीक है, अल्फा कार्बन पे जो करेक्ट Felkin-Ahn मॉडल है इसका ये है. और आपका जब ये एल्काइन इधर से करेक्ट अटैक कर रहा है, हमारा ये वाला न्यूमन, उसने क्या किया, इसने यहाँ पे एल्काइन ने अटैक किया, OH ऐसे बन गया, हाइड्रोजन बन गया, इसको सिंपली क्या किया, रीड्रॉ किया. सो आपका जो रिएक्शन के अंदर मेजर डायस्टेरियोमर बन रहा है आपका, ठीक है, या शायद ये एक्सक्लूसिवली डायस्टेरियोमर बन रहा है, वो आपका ये वाला बन रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. आपका क्या हुआ है कि यहाँ पे सिस एल्कीन ने आपका इपॉक्सीडेशन किया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम के साथ किया. ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम क्या करता है, सिलेक्टिवली आपका मतलब मिथाइलेशन करता है, और मिथाइलेशन करने के बाद आपका इपॉक्साइड ओपन करता है. इस केस के अंदर भी एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा. ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखना, whenever you have, मैं क्या बोल रहा हूं, whenever you have a coordinating group like OH, तो आपका क्या होता है, इस तरह का कुछ तो एक इंटरमीडिएट बनता है, जहां पे एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम इज अ कोऑर्डिनेटिंग मेटल, एल्युमिनियम कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ और इपॉक्साइड के साथ. तो इसी मॉलिक्यूल का जो एक और आपका होगा ना, ये इसी सेम मॉलिक्यूल का एक और कॉम्प्लेक्स है, उसका मिथाइल क्या करता है, अटैक करता है इस साइड से, और हमें क्या पता है, ये अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका, और ये कॉम्प्लेक्स जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, दिस इज व्हाट इट फॉर्म्स, और इसको जस्ट सिंपली बट वी हैव रीड्रॉन इट. So the product that we get is a syn-aldol. So this is a very important examples from Gates point of view, Net's point of view, and there is a very high probability that this question can be asked in coming exams. Now there one more interesting concept जो कि हम बोलते हैं कि chylation can reverse stereoselectivity. Okay, so when we talk about this particular example, so what they have done, they have simply used lithium borohydride to reduce the carbonyl, and this is the product that they get. इसके लिए अगर हम डिसाइड करें व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल, Felkin-Ahn मॉडल. एब्सोल्युटली. अब हमारे इस कार्बोनिल के साथ क्या है कि एक अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, क्या किया, परपेंडिकुलर पे उसको क्या किया, कार्बोनिल के परपेंडिकुलर प्लेस किया, इथाइल विथाइल. दिस इज द करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री Felkin-Ahn मॉडल. उसके बाद आपका हाइड्राइड ने अटैक किया, दिस इज व्हाट यू गेट, एंड इफ यू रीड्रॉ दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग. ठीक है, now came the problem when the same reaction was repeated using zinc borohydride on the same substrate. The major diastereomer you obtained was this one. However, ये वाला अगर मॉडल हम देखें तो ये वाला डायस्टेरियोमर तो हमको नहीं मिलेगा. So then it was proposed that whenever we deal with the metals, divalent metals, trivalent or tetravalent metals like zinc, titanium, cerium, what they can do, they can coordinate with the carbonyl at the same time with the SMA group, जिसकी वजह से the model that we propose now it becomes it is sometimes called Cram Chelation model or Chelation-Control model. इसके 2-3 नाम है.
सो दिस इज व्हाट हैपेंस। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको करेक्ट फेल्किन-आहन मॉडल बनाना है। सो दिस इज द करेक्ट फेल्किन-आहन मॉडल। अब आपका यहाँ पर हमारे पास हमको पता है जिंक इज अ डाइवेलेंट मेटल Zn2+। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन कोऑर्डिनेट विद दिस कार्बोनिल और एज वेल एज दिस सल्फर। सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो उससे कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा और आपका इथाइल क्या होगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका इस साइड आ जाएगा। नाउ इस तरह का भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका ये पूरा रोटेट होके इधर की तरफ क्यों नहीं आया। अगर ये पूरा का पूरा रोटेट होके इधर आ जाता, इथाइल क्या होता, इथाइल फिनाइल के बगल में आता, विच वुड हैव बीन एन अनस्टेबल सिचुएशन। ठीक है, तो इसीलिए एस आपका इधर की तरफ जा रहा है। आपका लार्जेस्ट, आपका जो दूसरा लार्जेस्ट ग्रुप है वो है इथाइल। इथाइल आपका परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, जिंक ने कोऑर्डिनेट किया और हमको पता है दिस हाइड्राइड विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक किया उसने। This is what we get, which on redraw is what we end up getting is the major diastereomer. So this is what we end up getting. ठीक है, so ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से चीलेशन एक्सप्लेन कर पाए। Now this is again the same example. When you carry out the reduction using sodium borium borohydride, this is the major product. When you carry out the attack of a nucleophile, then this is the major product. Again, ये वाले सारे के सारे मेटल्स हैं विच आर कॉमनली इन्वॉल्व इन चिलेशन। lithium sometimes it involves, sometimes it doesn't. For example, the question that was asked in this year GATE's exam, whenever lithium is involved in the chelation, you can be assured that आपको starting material product आपको दिया होगा। ठीक है, क्योंकि it is very very hard to predict whether lithium will be involved in chelation or not, but you have to consider that it does not involve in chelation, but sometime it does. Okay, so which are the metals that are commonly involved in chelation? As I said, it could be divalent metals like magnesium, zinc, copper, or tetravalent metals like titanium Ti4+, TiCl4 for example, and like Ce3+, as a cerium chloride. Whenever you are carrying out a Leuci reduction using sodium borohydride and CeCl3, you always the reaction proceeds via Chelation-Control Model or manganese. Or I have already made a video on the Nozaki-Yamagishi coupling where I talked about chromium chloride. So there also the reaction proceeds via chelation control. And whenever you have these monovalent cations like sodium or potassium, you will never observe any sort of a chelation with sodium or potassium. Okay, so this is the example I was talking about. You have this particular compound, and whenever you are carrying out the reduction using sodium borohydride, this is the major diastereomer you get. So you have this phosphonate, sorry, which is electronegative as well as this is the largest group. So this is placed perpendicular. So the nucleophile attacks from this side. And when you add cerium chloride, simply उसकी वजह से क्या हुआ आपका, अब ये इधर की तरफ move हो गया. This is what has happened. This has moved to coordinate with the cerium. Now this attacks. So अगर जब ये आपका इधर move हुआ तो आपका मिथाइल नीचे आ गया और हाइड्रोजन इधर आया. Nucleophile attack from this side. So this will be the major product. So this is a very good example which depicts both Felkin-Ahn model as well as the Chelation model. Or again, this is again a very good example which gives you a relationship between the reaction rate, and if you change the bulk around this R group, how does the ratio of diastereoselectivity changes. So what it is trying to depict you कि जैसे ही आप क्या करेंगे, आप इस R के अराउंड आपका बल्क बढ़ाएंगे, आपको डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी भी पुअर मिलेगी और आपका रिएक्शन रेट भी पुअर होगा। आपको करेक्ट मॉडल देखना होगा क्या है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। ठीक है, जब R के अराउंड बल्क कम है, यू कैन सी absolutely brilliant diastereoselectivity. So when you have TMS group which doesn't have bulk, good selectivity. Triethylsilane, good selectivity. This is TBDMS, reasonably okay. But as soon as you move to TBDPS, this is tertiary diphenylsilane, okay, थोड़ा सा क्या हुआ आपका दूसरा वाला बनना शुरू हो गया. And when you have shifted to TIPS chloride, so this is triisopropyl जिसका बल्क और ज्यादा है, तो it means very poor diastereoselectivity that is we are observing, और reaction rate भी आपका बहुत ज्यादा slow है. So if we talk about now, again same concept has been applied to the epoxidation of the olefin. आपका TBDPS ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका जो भी एडिशन होगा ना इपोक्साइड का फ्रॉम द अदर फेस, क्योंकि ये वाला फेस तो इसने क्या कर रखा है, ये वाला फेस हमारे जो बीटा फेस पे है, मतलब जो विच इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, यू हैव दिस ह्यूज ग्रुप दैट इज डाइमिथाइल टर्शिब्यूटाइल डाइमिथाइल फिनाइलसिलेन. ओके, तो
आपका मेजर डायस्टेरियोमर होगा आपका ये होगा, जो माइनर डायस्टेरियोमर होगा ये होगा, और माइनर डायस्टेरियोमर में आपका एमसीपीपी इस साइड से अटैक करेगा, मतलब जिस सेम साइड जहां पर ये है, ठीक है। और डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी आप देख सकते हैं इस पर 95:5 है, इसका मतलब एक्सक्लूसिवली आपको ये मिलता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए a Houk model was proposed, which I am going to make a video on and try to explain this on the basis of the stereochemistry model. But for the time being, you can see whenever what so okay. So what we have here is a cis alkene. जब भी हम we are dealing with cis alkene, then the epoxidation will always give you more diastereoselectivity. मतलब जब आपने सिस अल्कीन का इपॉक्सीडेशन किया आपने, तो आपको डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी मिली वो 95:5 मिली। अगर आप ट्रांस के बारे में करेंगे, ट्रांस एल्कीन का करेंगे, आप देख सकते हैं डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी आपकी ड्रॉप हुई, इट हैज बिकम 61:39। ऑल्दो इस केस में भी आपको ये मेजर मिला, बट उतना मेजर नहीं मिला। उस केस में आपको जब ये सिस था आपको मिला था 95:5, बट ये क्या डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी ड्रॉप हुई। उसका रीजन ये है कि अब आपका जो मिथाइल ग्रुप है ये भी इस साइड हो गया, जो कि आपका स्टीरिक इंटरेक्शन में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये मैं इसके और सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। Again, when you have a coordinating group like OH, again I said, if you have a coordinating group, this is going to be the major product because this helps in the coordination with the MCPB and directs the epoxidation from the same phase. Excellent diastereoselectivity, and this is the model that has been proposed. This is very, very important to remember because sometimes you could be given 4 options where different intermediates are shown and you are asked to select the correct intermediate. So you can see OH, what it does, it coordinates with the oxygen of the MCPB and directs the epoxidation from the same phase. Okay, so that is how the reaction takes place. Okay, so here we are given an example of stereoselective enolate alkylation. आपने क्या किया यहाँ पे aldehyde generate किया, so this is the enolate that you form, and what they have done is simply carried out the methylation. Methylation अगर जब हम इसका करेंगे तो there is the possibility of formation of 2 diastereomer. So what they say, when this R group is phenyl, butyl और tertiary TBDMS, तो जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे ही इसके अराउंड बल्क बढ़ रहा है आपकी डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी भी आपकी बढ़ती जा रही है। इसको एक ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि आपका अगर आपका यहाँ पर लार्जर ग्रुप होगा, अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर लार्जर ग्रुप होगा, तो यहाँ पर आपका क्या है कि TBDPS है ग्रुप। अगर आपका यहाँ लार्जर ग्रुप होगा तो इसका मतलब जो आपका एडिशन होगा मिथाइलेशन वो एक्सक्लूसिवली एक ही फेज से होगा, आपका नीचे वाला फेज तो आपका कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, ठीक है। तभी आप देख रहे हैं कि आपकी डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है जैसे ही हम इसके अराउंड बल कम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज एक्सप्लेन की है। उन्होंने अब क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया हुआ, तो अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, वही चीज आपको एक्सप्लेन की गई है सेम तरीके से, ठीक है। ओके, so I've already made a video on the Iodol reactions which can be stereoselective, in which I've already said that once you form the enolates, and then the addition can give you syn or the anti-Iodols, and there are various ways or various methods by using which you can exclusively get the desired product. I have made a video on the boron enolate, E versus Z enolate. I have already explained it in the videos, जिसके link description में, it would be very, very useful if you just watch those videos. And again, जैसे कि बोला, in the case of the Iodol, the diastereoselectivity can be explained on the basis of the Zimmermann-Traxler. अगर आप वो मेरे videos देखेंगे उसमें absolutely clear हो जाएगा why the cis enolates give you syn-aldol mostly and why trans give you anti-Iodol. बिल्कुल clear हो जाएगा, कोई doubt नहीं रहेगा. So I strongly advise you to watch those videos. उसका link description में है. Okay, so फिर भी इसमें एक बार देख लेते हैं जो whatever has been mentioned in the book. So when we talk about this cis enolate, so this position of when we have, this is the cis enolate in which the oxygen and methyl, they are on the same side. So this methyl is not actually axial, this is a pseudo axial, this is the in between position. So I'll try and make sure I can explain this on the basis of the model. This is what one of the video that I have planned, जहां पर मैं ये वाला completely कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉडल बनाऊं और आपको समझा सकूं, उसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो सिस इनोलेट है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, सिस इनोलेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिस जो आपकी पोजीशन है, दिस इज फिक्स, यू कैन नॉट चेंज इट। द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो आर है, इट कैन बी एट एक्सियल और इट कैन बी इक्वेटोरियल। दिस इज सूडो एक्सियल, दिस इज सूडो एक्सियल एंड दिस इज सूडो इक्वेटोरियल।
पर जब आपका ये एक्चुअल पोजीशन पे होगा देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप जो कि डिसफेवर्ड पोजीशन है, ठीक है. सो इट विल प्रेफर टू स्टे हियर, एंड इफ इट प्रेफर्स टू स्टे हियर देन that the reason why we end up getting syn-aldol is because the reaction takes place via this particular mode. And similarly when we talk about the trans-enolate, तो अब यहाँ पर आपका पहले क्या था, मिथाइल आपका सूडो एक्सियल पोजीशन पे था, now it is pseudo equatorial position. Now in this case again this particular conformation in disfavor because we have aldehyde का R group जब हमारा pseudo axial position पे होगा तो there is an 1,3 diaxial interaction between these two groups, so it is this conformation which will be favored. So in this case what we end up getting is the anti-Iodol, and why do we get anti-Iodol is explained in this particular video. Okay, तो अगर हमको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली अगर हम इनोलेट कोई बना लें तो हम एक चीज एश्योरिटी कर सकते हैं कि हमको जो हमारा डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी मिलेगी वो एक्सक्लूसिव मिलेगी. सो व्हाट वी कैन डू, आइदर वी चूज अ सबसेट इन विच व्हाट वी डू वी प्लेस अ बल्की ग्रुप. जैसे कि यहां पर अगर हम टर्शियरी बुटाइल ग्रुप लगा दें तो वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट द Z इनोलेट इज गोइंग टू बी एक्सेस. ओके, बट इफ वी पुट अ ग्रुप लाइक इथाइल देन वी नो दैट इट इज द enolate which is going to predominate. ठीक है, इसके अलावा what we can do, we can use the boron enolate. This is the chemistry that I've also already discussed, that when we use boron enolate, for example the dicyclohexyl boron chloride, when we use we get trans enolate, and when we carry out the reaction with the aldehyde we get exclusive anti-aldol, and when we use the 9-BBN boronate then what we get is a syn-aldol exclusively. So these are the things that I have also discussed in my video. ठीक है, so I hope you like this video, and जो मैंने लिंक में दिया हुआ सारी की सारी वीडियो देखो, आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, आपका ये सारा डायस्टेरियोसेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे.